ओके। अब तक हमने सीखा कि बेसिक इनवॉइस कैसे पोस्ट करते हैं, राइट। हमने वेंडर इनवॉइसेस पोस्ट किए, कस्टमर इनवॉइसेस पोस्ट किए, वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट एंड कस्टमर पेमेंट डॉक्यूमेंट पोस्ट किया। देन उसमें हमने टैक्स कंपोनेंट ऐड किया। अब हम ये देखते हैं कि जब ट्रांजैक्शंस होते हैं या जब बिजनेसेस ट्रेड करते हैं तो जो उनका पेमेंट टर्म होता है वो कैसे डिसाइड होता है, एंड उनके डिस्काउंट्स जो अप्लाई होते हैं वो डिस्काउंट का कंपोनेंट कैसे यूज होता है। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड पेमेंट टर्म्स, या इसको हम टर्म्स ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। अब दिस पेमेंट टर्म्स define the due date for vendor or customer invoices. And possible cash discounts, or we can say possible discounts for early payments. जो भी वेंडर्स है वो उनके कस्टमर्स को एनकरेज करते हैं कि आप अगर हमारा पेमेंट जल्दी करोगे तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो पेमेंट टर्म है इसका जो भी बेसिक था वो हमने ऑलरेडी समझ लिया था, राइट। पेमेंट करने के लिए जो भी टाइम पीरियड होता है दैट इज नथिंग बट अ पेमेंट टर्म। नाउ दिस पेमेंट टर्म can be defined on two levels. First is master data level, यानी कि जो हम वेंडर मास्टर डेटा या कस्टमर मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं उसमें हम पेमेंट टर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इज ट्रांजैक्शनल लेवल। जब हम इनवॉइसेस पोस्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम पेमेंट टर्म डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पेमेंट टर्म में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज बेसलाइन डेट। नाउ this baseline date defines the date from which due date count will start। यानी कि जो बेसलाइन डेट है वो एक डेट डिफाइन करेगी जहां से हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होगा फॉर फॉर पेइंग द ड्यू अमाउंट। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हम एसएपी में डिफाइन कर सकते हैं कि ये बेसलाइन डेट हम किस डेट से लेंगे, या तो पोस्टिंग डेट से या डॉक्यूमेंट डेट से या एंट्री डेट से। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट डेट, सेकंड इज posting date, and third is entry date। इन तीनों में से कोई एक
हम एज अ बेसलाइन डेट डिफाइन कर सकते हैं। नाउ पेमेंट टर्म्स आर डिफाइंड एट कंपनी कोड लेवल। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। नाउ लेट अस गो टू एसएपी। अब let us say that we sold some goods to a customer. Okay, let us say Cipla Private Limited sold goods worth rupees 1 lakh to, let's say, daycare medical. अब इसमें सेल हुआ है, राइट? तो इन द बुक्स ऑफ सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड क्या अकाउंटिंग एंट्री आनी चाहिए? Medicine account debit to bank or cash. ओके, दिस शुड बी कस्टमर अकाउंट डेबिट, यानी कि डे केयर मेडिकल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट? Yes. ओके, अब यहाँ पे गुड्स सेल किए हैं वर्थ रुपीज 1 लाख, दिस शुड बी क्रेडिट। अब सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड ने डे केयर मेडिकल के लिए पेमेंट टर्म्स दिए हैं और दे हैव डिसाइडेड पेमेंट टर्म्स। अब पेमेंट टर्म्स ये बोलते हैं दैट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 1 सेकेंड। ओके, नाउ पेमेंट टर्म ये बोलते हैं कि इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 10 days of sale, the customer will receive a discount of 2%, यानी कि डे केयर मेडिकल को 2% का डिस्काउंट मिलेगा अगर उन्होंने 10 दिन में इस अमाउंट का पेमेंट किया। If the amount is made within 20 days, they will get a discount of 1%. And if the amount is made within 30 days, there will be no discount. जितना भी नेट प्राइस है वो पूरा डे केयर मेडिकल को देना पड़ेगा। लेट अस गो टू एसएपी। अब पेमेंट टर्म डिफाइन करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट क्रिएट द डिस्काउंट अकाउंट्स। अगर हमें यहाँ पे कस्टमर को डिस्काउंट्स देने हैं तो वी नीड अ जीएल अकाउंट फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट गिवन। Go to transaction code FS00
Discount received is a balance sheet account or profit and loss account. बैलेंस शीट अकाउंट क्यों बैलेंस शीट अकाउंट? डिस्काउंट वसूलने के जैसे अपना बैलेंस शीट अच्छा, डिस्काउंट अगर रिसीव हो रहा है तो वो है सॉरी हमारा सॉरी सॉरी ये हाँ बराबर अच्छा लाइबिलिटी है सर डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ लाइबिलिटी। अगर वेंडर हमें डिस्काउंट देगा तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। नहीं सर ये तो बढ़िया हो गया अच्छा तो अपने को फायदा होगा देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि हमारे कुछ पैसे बच रहे हैं जो हमारी इनकम है, राइट? तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। ओके, डिस्काउंट जो भी हमें मिल रहा है दैट इज एन इनकम, एंड जो डिस्काउंट हम कस्टमर्स को दे रहे हैं दैट इज एक्सपेंस फॉर अस। ओके, अब लेट अस सी कि हमने कौन सा जीएल अकाउंट डिफाइन किया था। 3110 यस, क्लिक ऑन क्रिएट 311 ऑल zeros. सर कंपनी कोड Okay, now this is non-operating expense or income. 3100 3110, discount received. Control data tab में you can select this balances in local currency. In case अगर कोई foreign currency में transaction होता है तो your discount given and discount received account will automatically get settled in local currency. आपको इस currency को convert करने की जरूरत नहीं पड़ेगी at the month end or at the year end. Next is sort key 001. This is G001. Okay, save. हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रिएट किया। नाउ लेट अस क्रिएट डिस्काउंट ग्रांटेड और डिस्काउंट गिवन अकाउंट। फोर टू ऑल zeros. I'll copy this account and change the description. Discount given. This is also discount given. Save this. अब यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि अकाउंट ग्रुप 3110 only defined for the accounts from 31 all zeros to 31 all 9, and the data contains error, you cannot save. Okay, अब हमने डिस्क्रिप्शंस चेंज कर लिए अकाउंट्स के, लेकिन जो अकाउंट ग्रुप हमने सिलेक्ट किया है दैट इज स्टिल 3110। एसएपी हमें ये बोल रहा है कि जो 3110 वाला अकाउंट है वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड नंबर रेंज के लिए ही सिलेक्टेड है, यानी कि 31 ऑल जीरो से लेके 31 ऑल नाइन्स तक ही आप डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अकाउंट ग्रुप यूज कर सकते हो। बट करंटली द अकाउंट विच वी आर क्रिएटिंग इज 4 टू ऑल zeros, तो हमें यहाँ से इसका अकाउंट ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। दिस इज डिस्काउंट गिवन
सेव। दो अकाउंट्स हमने क्रिएट कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, we have to assign these accounts to make the postings for discount. Let me open the Word document. Define accounts for cash discount taken. Transaction code is OBXU. We can go from the path as well. Slash N SPRO SAP reference IMG financial accounting accounts payable accounts receivable business transaction. This is first we will make the discount account for vendor, यानी कि हम डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया है वेंडर से उस अकाउंट को लिंक करते हैं एंड उसके बाद जो डिस्काउंट हम कस्टमर्स को दे रहे हैं हम उस अकाउंट को भी लिंक करेंगे। आउटगोइंग पेमेंट्स आउटगोइंग पेमेंट ग्लोबल सेटिंग्स डिफाइन अकाउंट्स फॉर कैश डिस्काउंट टेकन चार्ट ऑफ अकाउंट इज HNMO कंटिन्यू। अब अगर यहां पर देखो दिस ट्रांजैक्शन इज SKE कैश डिस्काउंट रिसीव्ड क्लिक ऑन अकाउंट्स ओके फर्स्ट सेव दिस अकाउंट्स में you have to enter discount received account. That was 311 all zeros. Save, go back. अब हमने आउटगोइंग पेमेंट्स के लिए किया यानी कि जो पेमेंट हम वेंडर को दे रहे हैं। नेक्स्ट हम इनकमिंग पेमेंट्स के लिए इस अकाउंट को डिफाइन करते हैं यानी कि जो पेमेंट्स हमें कस्टमर से आ रहे हैं। इनकमिंग पेमेंट्स इनकमिंग पेमेंट ग्लोबल सेटिंग्स डिफाइन अकाउंट्स फॉर कैश डिस्काउंट ग्रांटेड एंटर चार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड कंटिन्यू सेव दिस। यहाँ पे वी हैव 4 2 all zeros. प्रेस एंटर सेव। ठीक है, अब हमने को कैश डिस्काउंट एक्सपेंस यानी कि कैश डिस्काउंट गिवन के लिए भी अकाउंट को लिंक कर दिया। हम एसएपी को ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम किसी को कैश डिस्काउंट देंगे तो ये वाला जीएल अकाउंट अपडेट होना चाहिए एंड जब हमें वेंडर से डिस्काउंट मिलेगा तब 311 ऑल जीरोस वाला अकाउंट अपडेट होना चाहिए। क्लियर? Yes. ओके ओके, डिस्काउंट के लिए इतना ही कॉन्फ़िगरेशन था। नाउ लेट अस डिफाइन पेमेंट टर्म्स। Transaction code is OBB8. Enter. Okay. अब
यहाँ पर ऑलरेडी प्री डिफाइंड पेमेंट टर्म्स दिए हैं एसएपी ने। 0001, this is 0002, 0003. If we want to create our own payment terms, we can click on new entries. अब यहाँ पे we have to enter the payment term, or we have to enter the code which we have to give for these payment terms. अब यहाँ पे we will use HN01 and own explanation में हम देते हैं, let's say discount receipt. This is for HNMO. Now अकाउंट टाइप, यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको इस पेमेंट टर्म को कस्टमर पे अप्लाई करना है या सप्लायर पे अप्लाई करना है या दोनों पे अप्लाई करना है। वी विल जस्ट सिलेक्ट सप्लायर एंड कस्टमर को हम डीसिलेक्ट कर देंगे। दिस इज बेसलाइन डेट कैलकुलेशन। आप एक फिक्स्ड डे को एज अ बेसलाइन डेट मेंटेन कर सकते हो। पेमेंट ब्लॉक, लेट्स से कि कोई वेंडर है जिसका कोई रीजन के वजह से आपको पेमेंट ब्लॉक करना है। ठीक है, अगर आप पेमेंट करने के लिए ट्राई भी करोगे तो वो पेमेंट नहीं होगा इफ यू पुट द पेमेंट ब्लॉक। दिस इज ब्लॉक की। एंड यहाँ पर इफ यू क्लिक ऑन द सर्च आइकॉन, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ब्लॉक्ड फॉर पेमेंट्स, मैनुअल पेमेंट ब्लॉक, देन पेमेंट रिक्वेस्ट, पेमेंट रिक्वेजिशन। बेसिकली अगर कंपनी को वेंडर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है या कोई भी और प्रॉब्लम हो रहा है, तो कंपनी कैन ब्लॉक दैट वेंडर फॉर द पेमेंट। पेमेंट मेथड, अगेन आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो पेमेंट टर्म आप डिफाइन कर रहे हो, ये कौन से पेमेंट मेथड पे अप्लाई होना चाहिए। चेक्स पे होना चाहिए, कैश पे होना चाहिए, बैंक ट्रांसफर पे होना चाहिए। यहाँ पे आपको अलग अलग पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे। चेक पेमेंट, देन ये सारे क्रिएट किए गए हैं। टी इज फॉर ट्रांसफर, डी इज फॉर कैश, सी इज फॉर चेक। इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से पेमेंट मेथड के लिए ये पेमेंट टर्म चाहिए। अगर आपने पेमेंट टर्म डिफाइन किया, आई एम सॉरी, अगर आपने पेमेंट मेथड डिफाइन किया तो सिर्फ उस स्पेसिफिक मेथड से जब आप पेमेंट करोगे तब ही ये पेमेंट टर्म अप्लाई होगा। हम अभी कोई भी पेमेंट मेथड डिफाइन नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन डेट। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस है। फर्स्ट इज नो डिफॉल्ट, सेकंड इज डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड देन एंट्री डेट। अब इन तीनों में से डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट एंड एंट्री डेट में से आप कोई एक डेट को एज अ बेसलाइन डेट डिफाइन कर सकते हो। जनरली हम डॉक्यूमेंट डेट कंसिडर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। लेट अस से कि आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज की है एंड आप उसके इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, इफ लेट्स से कि आपने 50,000 का कोई गुड्स परचेज किया तो आप उसका 5 इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट करोगे। तो वो चीज भी आप एसएपी में डिफाइन कर सकते हो। अभी के लिए हम फुल पेमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस टर्म, परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज, फिक्स्ड डेज। अब हमने एक्सेल में एक एग्जाम्पल देखा था दैट अगर कस्टमर 10 दिन में पेमेंट करता है
और दिस इज फॉर सप्लायर। अगर हम सप्लायर को 10 दिन में पेमेंट करते हैं तो वी विल गेट 2% डिस्काउंट। अगर हम 20 डेज में पेमेंट करते हैं वी विल गेट 1% डिस्काउंट। एंड अगर हम 30 डेज में पेमेंट करते हैं तो वी विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट। सेम चीज आप फिक्स्ड डे में भी कर सकते हो। दिस इज नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे यू कैन डिफाइन अ फिक्स्ड डे, लाइक लेट्स से 20th ऑफ अक्टूबर से पहले अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। 30th ऑफ अक्टूबर से पहले आप पेमेंट करोगे तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा। ये समझ आया? यस सर। ओके, सेव दिस। अब हमने एसएपी को सप्लायर के लिए पेमेंट टर्म दे दिया। लेट अस डिफाइन फॉर कस्टमर। कस्टमर के लिए वी विल यूज HN02। दिस इज डिस्काउंट गिवन and this is for HNMO. Deselect supplier. Baseline date is document date, and this is 1%. Um, okay. This is 2%. This is 1%. Fixed day. Let's say 10th. Let us say 20, and this is 30. Save this. अब हमने पेमेंट टर्म्स भी डिफाइन कर लिए। For customer, we defined HN02. For vendor, HN01. हमने पेमेंट टर्म्स डिफाइन कर लिए, हमने डिस्काउंट अकाउंट भी डिफाइन कर लिए। अब जो भी डिस्काउंट कस्टमर्स को मिलेगा ऑन देयर पेमेंट्स, वो सारे डिस्काउंट का जो भी रिकॉर्ड बनेगा दैट विल गेट generated और that will get stored in the GL accounts। अब इतना करने के बाद हम एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं। फर्स्ट लेट अस चेक द लाइन आइटम्स FBL3N। कंटिन्यू। अब कैश के लिए हमारे पास ओपन आइटम्स है। बैंक अकाउंट इज क्लियर्ड। इन्वेंट्री इज ऑल्सो क्लियर्ड। ओके, कैश अकाउंट एंड टैक्स अकाउंट्स, आउटपुट जीएसटी एंड ओके, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड कैश अकाउंट। इन तीन अकाउंट्स के अलावा बाकी सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। लेट अस चेक फॉर vendor line items as well।
वेंडर लाइन आइटम्स में भी सब कुछ क्लियर है। लेट्स चेक फॉर ओके ऑलराइट। अब हम एक इनवॉइस पोस्ट करते हैं। वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या है? F60। FB60। एंटर। First we will change the company code. सर इसमें एक और भी है ना, एक FB60 और एक और भी कोड है ना जिसमें अपन वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर सकते हैं। Yes, that is F-02। यस। अब लेकिन उस वो वाला स्क्रीन थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में इससे। करेक्ट, इसको हम एंजॉय पोस्टिंग बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एक ही पेज पे मिलते हैं। वेराज अगर आप F-02 में जाओगे, यहाँ पे आपको डेबिट के लिए फर्स्ट लाइन मिलेगी एंड इसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको क्रेडिट के लिए और एक लाइन मिलेगी। Our company code is HNMO. Vendor is SEAT Tires. Invoice date 10th of September 2025. Amount, let's say 1 lakh. This is vendor invoice with discount. Select the GL account. GL account will be domestic sales, Agra. Paste it in the text. Now click on simulate. Net due date is in the past. Press enter. Again press enter. अब अकाउंटिंग एंट्री हो रही है सियाट टायर्स 1 लाख रुपीज, डोमेस्टिक सेल्स आगरा 1 लाख रुपीज। दिस इज विदाउट टैक्स। लेट अस गो बैक। ओके, क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स। हमने टैक्स कोड क्या क्रिएट किया था? भी। ओके, अब अगर यहाँ पर देखोगे आई गेस हमने B1 क्रिएट किया था, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं पे भी B1 नहीं दिख रहा। यस। इसमें B1 का ऑप्शन नहीं है बिकॉज इन द ट्रांजैक्शन कोड OBBG किसी ने टैक्स प्रोसीजर चेंज कर दिया। अगर टैक्स प्रोसीजर कंट्री को असाइन नहीं होगा तो हमें यहाँ पे हमारा कंपनी कोड भी नहीं दिखेगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे हमें हमारा टैक्स कोड भी नहीं दिखेगा। गो टू न्यू स्क्रीन, ट्रांजैक्शन कोड OBBG, एंटर। कंट्री इज IN। यहाँ पे प्रोसीजर है प्रो टैक्स, बट टैक्स प्रोसीजर जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज टैक्स IIN। इसको फिर से कंट्री से असाइन करो एंड सेव इट। नाउ गो बैक /NFP60। हम फिर से इसी ट्रांजैक्शन कोड में आएंगे। वेंडर इज 700402। इनवॉइस डेट 10th of September। अमाउंट 1 लाख। कैलकुलेट टैक्स। अब यहाँ पे हमें टैक्स कोड्स दिख रहे हैं। हमने C1 डिफाइन किया था आई गेस, राइट?
This is for output. शायद यहाँ से डेटा डिलीट किया था. Okay. It was B1. अगर चेक करना है तो you can go in transaction OB40. यहाँ पे YIC is for input. Account is 15 all zeros. हमने यहाँ पे टैक्स कोड मेंटेन नहीं किया था. करेक्ट. ओके. टैक्स कोड वाज B1, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं. GL अकाउंट 301 all zeros. This is vendor invoice with tax and discount. जब आप प्रैक्टिस करोगे यू कैन पोस्ट वन इनवॉइस विथ टैक्स एंड डिस्काउंट एंड वन इनवॉइस विथ ओनली डिस्काउंट. आपको इसका डिफरेंस समझ आएगा. ओके सर. Paste it and click on simulate. Net due date is in the past. Enter. Posting is only possible with zero balance. Correct the document. अगर यहाँ पर देखूं, we have 18,000 rupees जो कि remaining balance है. Go to editing options and यहाँ से इस indicator को deselect करो. Go back. अब यहाँ पे बैलेंस जीरो हो गया. नाउ सिम्युलेट. अकाउंटिंग एंट्री इज डोमेस्टिक सेल्स आगरा डेबिट, इनपुट टैक्स एंड आउट आई एम सॉरी CGST SGST डेबिट टू सियाट टायर्स क्रेडिट, बिकॉज हमें वेंडर को पैसे देने हैं. वेंडर इज अ लाइबिलिटी. ये अकाउंटिंग एंट्री क्लियर है ना. यस सर, समझ समझ गया. सेव दिस डॉक्यूमेंट 404 आई एम सॉरी 4004 was posted. Vendor invoice, this is 4004. वेंडर इनवॉइस पोस्ट करने के बाद इमीडिएटली वी विल मूव ऑन टू द पेमेंट. ट्रांजैक्शन कोड इज F-53. पोस्टिंग डेट, लेट्स से 19th of September 2025. Bank data, we have to select the bank account. 12 all zeros 1. अब
हमने 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया था, राइट। 10th of September को इनवॉइस पोस्ट हुआ है एंड 19th of September को हम इनवॉइस का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम विद इन 10 days इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। For 1 lakh rupees, if we get 2% discount, how much it will be? Rishikesh? 2000 सर। Yes. तो जो अमाउंट हम एंटर करेंगे दैट विल बी 1 लाख रुपीज माइनस 2000, विच इज 98,000। Vendor payment made with discount. Now select your vendor and process out. I'm sorry, process open payment. Okay, 1 second. हाँ, अब अगर यहाँ पर देखोगे कैश डिस्काउंट के कॉलम में हमें कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, यानी कि कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं हुआ है। नाउ दिस इज बिकॉज हमने पेमेंट टर्म्स मास्टर डेटा लेवल पे या ट्रांजैक्शनल लेवल पे मेंटेन नहीं किया था। नाउ व्हाट वी विल डू इज हम वेंडर मास्टर डेटा में जाते हैं, बीपी, we will search for our vendor with the supplier number. I want to search this supplier by my company code, HNMO. Seat Tires, start. This is our vendor. Double click. अब जो पेमेंट टर्म्स है we will assign it to the vendor on company code level. Open the drop down. FLVN00. अब यहाँ पे कंपनी कोड का टैब आ गया, डबल क्लिक। अब तक हम सिर्फ वेंडर अकाउंट मैनेजमेंट वाला टैब देख रहे थे, जहाँ पे हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट सॉर्ट की ये दो चीजें डिफाइन की थी। नाउ लेट अस गो टू द पेमेंट ट्रांजैक्शन बिकॉज पेमेंट टर्म इज रिलेटेड टू द पेमेंट्स। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है टर्म्स ऑफ पेमेंट। वेंडर के लिए हमने डिफाइन किया था HN01। प्रेस एंटर, डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर HNMO एंड इसको सेव करो। नाउ let us go back to the invoice or to the payment. Account is, let's say, 12 all zeros 1. Amount is 98,000 and 2,000 rupees का हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। ओपन आइटम इज 700402। प्रोसेस ओपन आइटम्स। यहाँ पे अभी भी हमें कैश डिस्काउंट में कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। वाई? बिकॉज जब हमने इनवॉइस पोस्ट किया था तब हमने पेमेंट टर्म को वेंडर मास्टर डेटा से लिंक नहीं किया था।
मीनिंग कि इनवॉइस पोस्ट करने के पहले ही यू हैव टू डिफाइन द पेमेंट टर्म्स इन द मास्टर डेटा और इन द ट्रांजैक्शन डेटा। नाउ व्हाट वी विल डू इज इस इनवॉइस को हम नॉर्मली क्लियर करते हैं। चेंज द अमाउंट टू 1 लाख रुपीज। अब इसमें हम डिस्काउंट का कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते। एंटर एंड सेव। ठीक है, डॉक्यूमेंट 8009 was posted. Now let us go back to transaction FB60.